Yeah, we'll start the class in few minutes, guys. In 5 minutes. Let more students join. Yeah, guys, let's get started. Uh, Two questions were easy, 10 minutes, hard one took 10 to 15 minutes. There are total questions. Okay. Okay, guys. So today we'll be having the discussion on the contest questions or anything. So I'll just go and get some water. Okay. Things to answer. So it'll be in 2 minutes. Okay? So I'll be back in 2 minutes. So can you meanwhile tell me like what are the doubts? Just put it in the chat box. Okay? So I'll just see. I'll just come back and see. Okay?
Yeah, guys, I'm back. So, so what were the questions? First, how to find the first occurrence and last occurrence when we are getting hash map of key and its frequency. Um, how to find? Can you put the question in a proper way? How to find first occurrence or last occurrence of an element in the hash map? What do you mean by first occurrence and the last occurrence, bro? Preeti? Acha, so I think there were 3 questions that were asked in the test, if I'm not wrong. Right, so let me just share my screen. Yeah, let me just unmute. Wait, let me just share my screen first. Yeah, guys, so this is one of the question. Resultant array after removing anagrams and group shifted strings and longest consequence sequence. Am I correct? No? Okay. अच्छा ये नहीं है? Okay, then let me see. Unique elements in an array, find the element which are present in array 1 but not in array 2. Maximum frequency character, print unique element not present in second array. Acha, these are the questions. Okay. Yeah, these questions also I can explain. Yeah. So these are also good questions. Okay. So guys, can anyone unmute and tell me what are the difficulties that you guys face me so we can have a conversation regarding that. So I'm letting you guys unmute. Okay, since the strength is low, just use that responsibly. Okay, and unmute yourselves. किसको करना? Morning class नहीं हुई थी. No. Yeah. Hi. Hello. Naushad, you want to get unmuted? Hi, sir. Yeah, hi. Sir, exactly my code was correct, but it's not submitting. I So don't what, know why. like, which question you're talking? I got like थोड़ा miscommunication हो गया mostly. तो मुझे बताया गया था कि these are the 3 questions that were asked in your test, but seems like कुछ और पूछा गया था. So cool. No worries. So we'll Sir, do that. I face difficulties in the elements present in first array, not in second. Okay. I don't know the. So what? So which question exactly? Can you tell me? Element present in the first array, not in second. Element present in first array. Not in second. Okay. So it's a GFG question, sir. अच्छा. तो problem क्या हुई थी? Like, what is the approach? Tell me the approach. ठीक है. How did you approach it and how did you implement it? ठीक है. Let's do that in that way. Sir, firstly, I create the hash set. Hash set. Okay. Put all values of array 1. Then I create the second. After that, I am putting all the elements of array 2. Exactly, sir. Hash set में तो वो like duplicate just value explain. होंगी ही नहीं. Just explain as if you're doing it to an interviewer. ठीक है. मतलब don't tell the solution. मतलब try to give it in the format which you gave it to the interviewer. Like, this was the question asked. Okay, so this is the approach which I've taken first, and then I thought that this is more optimized, so I've taken this. Okay, ऐसे समझो आप. एक बार देखना चाहता हूँ, so that it will be helpful for you guys. Okay. हाँ, बताओ. I'm going to mute, sir. अरे bro, don't feel afraid, bro. Like, try करना. Like, मतलब अभी मैं ही हूँ ना, so like the strength is also less. Don't be afraid. ठीक है. अगर कुछ गलत होगा तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. Like, I'm there for you. Sir, exactly. I didn't submit anyone.
अच्छा अच्छा अच्छा. I don't know why, sir. My approach was correct, but I don't Okay, know tell why. me the approach. Okay, fine. Tell me the approach. I'll correct you. Yeah. Sir, firstly, I think about the brute force. हाँ. Okay. I use the two nested loops. Okay, correct. Uh, So for each element, for- you'll be checking if that same element is yes, present in yes, the other. yes, sir. Okay, great. Again. Another one. Sir, after that, I create the array list and putting all the elements Okay, great. which are Brute force समझ present में आ in. गया. आगे बताओ. Hashing. Sir, hashing, my hashing is not very clear, sir. ठीक है. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो तुम सही बोल रहे हो. लेट मी जस्ट ओपन द पीपीटी. ठीक है. तो लाइक वन ऑफ मुझे क्वेश्चन जितना तक समझ में आया मैं एक बार बताता हूँ. ठीक है. यू गाइस टेल मी इफ आई वाज करेक्ट और नॉट. ठीक है. सो क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि यू हैव टू एरेस, यू आर गिवन टू एरेस, है ना. सो जितना मुझे समझ में आया सही है कि सही समझा है गलत समझा बताओ मुझे. ठीक है. एक सेकंड गाइस, लेट मी ओपन माय पीपीटी. सुबह कोई क्लास नहीं हुई ब्रो, अभी हो रहा है. ठीक है. हेलो. या हाय. जो क्वेश्चन हाय उधर जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, तो मैंने उसका लिंक भेज दिया है एक्यू जॉब का. चिल है. एक बार देखो यहाँ पे. मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई मुझे कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ है. 5 6 7. ठीक है. इसमें यू हैव समथिंग लाइक 2 3 5 6 7 1, है ना. सो यू आर सपोज टू रिटर्न व्हाट 4 ना. एम आई करेक्ट? यही है ना क्वेश्चन. सो दिस इज द array 1, this is the array 2, right? And like you are supposed to return the elements which are present in A1 not in A2, correct? Yes, sir. है कि नहीं? इतना ही है ना क्वेश्चन. गाइस किसको प्रॉब्लम है? नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है. ओके. अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैटर्स. ओके. तो देखो मेरे हिसाब से ये चीज देखना एक बार कि मेरे हिसाब से इसको करने का क्या तरीका हो सकता है. देखो पहला चीज तो लाइक फॉर ईच एलिमेंट. ठीक है. इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा, तभी तो तुम रिटर्न कर पाओगे व्हाट आर द एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल 1 इज नॉट देयर, यू आर सपोज्ड टू रिटर्न 1 and 4, राइट? करेक्ट. जस्ट वेट. या एक बार चार्ट यूज करना गाइस फॉर द टाइम बीइंग टिल आई कंप्लीट दिस थिंग. ठीक है. ओके ओके. सो देखो लाइक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ नीड to go to each and every element and just check if that element is present in this second array or not, correct? There is a need for that, right guys? हेलो, है ना. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो फर्स्ट थिंग इज दैट कि 1, जस्ट गो टू 1 एंड जस्ट चेक इफ 1 इज प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स और नॉट. ठीक है. अगर नहीं है तो 1 को प्रिंट कर देना, मतलब प्रिंट या ऐड कर देना है लिस्ट में. फॉर 2 जस्ट चेक इफ 2 इज प्रेजेंट या 2 इज प्रेजेंट. फॉर 3 जस्ट चेक इफ 3 इज प्रेजेंट या 3 is present, so stop. For 4 just check if 4 is present. 4 is not present, so print 4, right? For 5 just check 5 is present. Yeah, 5 is present. For 6 check if 6 is present. Yeah, 6 is present, so stop. 7 is present, right? So in this way, so नहीं कॉन्टेस्ट रिलेटेड ही है, लाइक कुछ नया टॉपिक लाइक नया क्वेश्चंस मैंने सोचा था तुम्हारे कॉन्टेस्ट में पूछा गया था, तो आई जस्ट आस्क देम इफ यू वांट. ठीक है. सो या गाइस, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो so देखो like you're searching in the whole array again and again, right? So what is that data structure which does this thing easier? ठीक है. For each element you're going for big of n, right, to search. What is that data structure which can do it in a very quick manner? The same thing in a very quick manner. बताओ. हाँ करेक्ट. हैश सेट या हैश मैप, करेक्ट. तो देख लो, right? So store these things in a hash map. ठीक है. You can put it against some index or something. ठीक है. मतलब hash map भी सिखाया तो I'll go for the hash map, right? So देखो 7 is pointing to 7 and बस इतना ही है. ठीक है. For each element देखो कि if it contains the key in this particular hash map, contains key करना,
If it contains key, don't do anything. If it doesn't contain the key, then add it into the array list. How simple is this question? Correct. So इस element, like for each element, you will just iterate. ठीक है. ठीक है. And if you will check if this element is present in this hash map or not. If it presents, if it is present, then you don't do anything. If it is not present, you will just add it into the array list. Pawan Singh, can you raise your hand and just let me know what is the trick? I didn't get you. Pawan Singh, एक बार can you raise your hand? Just unmute yourself. मतलब hand raise करके एक बार unmute करना. मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला. So let's have a discussion regarding that. Guys, hello. Yeah. Hello. Yeah, hello, sir. Hi. Yeah, sir. So while we have to take care of the sequence that were available in array 2, so that we have to print in the sequence manner. Like if 2 is available, 3 is not available, so we have to first print 3. So we have to take care while inserting in the hash map to return to print the element. That was the trick. Else it was not getting all cases passed. देखो बात सुनो कि जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट A2 में नहीं है, उसको प्रिंट करना है, राइट? बट सीक्वेंस में प्रिंट करना था सर वहां पे. कौन सा सीक्वेंस? अगर उस हैश सेट से अगर हम हैश सेट से जाके निकाल के प्रिंट कर रहे थे तो तब वो एरर मतलब सारे टेस्ट केसेस पास नहीं कर रहे थे. निकाल के कहाँ प्रिंट कर रहा? सो सी मतलब इस केस में बताओ कि 1 पहले आया 4 से, तो 1 प्रिंट हो गया पहले, है ना? Yes sir. That is correct, sir. But while I was done before, like I put all the value in the hash set, then मत करो ना. देखो array, like if you put this into the hash set also, then array order might be disturbed, right? But what I'm saying is, if you just keep on running the loop here only, why to put this in the hash set? There's no need to put it in the hash set. Hash set या hash map में तब भी रखो जब you're trying to get it in big of one time, ना? Yes, sir. So first I put in the hash map, that was so I was not able to pass just test put it. these So I elements did into this. hash set or hash map, ठीक है? So like after you put these elements into hash set or hash map, इसको चेक करो, इस ऑर्डर में तो हो रहा है. लाइक तुम इस ऑर्डर से करोगे, रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा तुम्हें. एग्री? Yes sir, correct. Yeah, I agree sir. तो लाइक इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No sir, clear है, this one clear. ओके, चलो चंचल को अनम्यूट करते हैं. या चंचल बोलो. Hello Uday, how are you? हाँ बोलो. Uday, can you please tell me in which question how we can justify that we have to use hash set over there instead of using hash map? देखो, हाँ ओके, गुड क्वेश्चन. बट लाइक ये काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है? हैश सेट एंड हैश मैप, बोथ ऑफ देम वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ हैशिंग, राइट? What does it mean? कि you can access the key in this just big of one time. Agreed? Okay. Right? Hash map में it's a map, right? Map मतलब key value पे होंगे. But hash set में you only have keys. Correct? You know this is unique and this is unique, right? If you need some value against another value, okay, then in that case you will be using a hash map. But अगर तुम्हें कुछ map ही नहीं करना, like if you don't want the data to be stored in key value pair, then don't use hash map. Okay. है ना? Hash set में only keys will be stored, right? Like for example, यहाँ पे हमको index से कोई मतलब ही नहीं है, तो what's the point of using a map, right? So just use a hash set. Hash set का कुछ नहीं है यार, it is really simple. ठीक है? Hash set ऐसे ही होने वाला है, ठीक है? So whatever the key type is, if at all it is integer, just put it as this and just do it new hash set, right? And you can just add them, ठीक है? Add or whatever the value is, 5 या 6 or whatever, right? उसके बाद अगर तुम्हें चेक करना है hs dot contains key, I've already sent the doc, ठीक है? Just review that doc, ठीक है? True या false देगा बस. लेकिन अगर hash map में तो 5 should be mapped into 10, लेकिन hash map भी
हैश सेट जो काम करे वो करेगा, ठीक है, वो बताएगा कि 5 है कि नहीं, लेकिन 5 के अगेंस्ट कोई वैल्यू चाहिए कि नहीं वो तो तुम्हें हैश मैपिंग बता सकता है, ये नहीं बता सकता। Okay. So for adding the values inside the hash set, we use dot add function. ऐड, हाँ मुझे जितना याद है ऐड यूज करना है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे हैश सेट बनाया विच इज ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐड कर दिया, कूल, तो Okay. ऐड ही है फंक्शन बेसिकली, उसमें पुट है ना, इसमें ऐड है, बस इतना डिफरेंस है, Okay. ठीक है। Okay. Okay, cool. So anything else, guys? Where we'll get more functions for the syntax of hashing like get or default. So I've already pinged that thing, bro. Abhishek, ठीक है? Get or default function और बाकी सब functions का मैंने एक doc भेज दिया था तुम लोग को, ठीक है, Discord में भेज दिया था शायद, ठीक है, just view that, लेकिन जो like what like the practically ज्यादा use करने वाले जैसे put हो गया, contains key हो गया, get हो गया and these things, ये सब तो like these are thought, ठीक है, get or default and all, ठीक है, but जो extra है जो इतना भी फायदा का नहीं है, ठीक है, so I've just skipped them for your convenience to read, ठीक है, but with these things you can do almost all the things. Sure, Rohan, we can do that. Using constructor, see, constructor is a basically like whatever you pass, okay? So the parameters you pass will be called while creating the object, right? So if at all you pass something here, okay, with those values, the hash set will be created initially while creating only. It's not necessarily you need to add it, okay? In some problems of hash map, we store values as its index, but by storing index in values, it already using hashing map, right? So at times, okay, what happens is that when you're hashing, okay, you might be needing the value against its index, right? So if the index is correct, I mean, if you know what is the index of that particular element, and if you need it while doing some problem, okay, then you can map it against it, okay. Varna, if at all from the array only, if you want to do it, will be big of n, right? So to reduce that time complexity, we map the value, okay, matlab we map the a of I, arr of I with its index, so that like from that index, from that array, like you can easily tell what is the element ka index easily. I'll tell you about linked hash map, I'll tell you about hash set, tree set, ये सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा. Like when we do the trees, then it will be much clear. Any other question from the contest, guys? कोई और question है जो दिक्कत दिया तुम लोग को? Any question you want me to discuss, or else I'll discuss my questions, which we were having the discussion previously. Tell me. Just put it in the chat. Or let me just see. Maximum frequency character. Okay. What is maximum frequency character? Can anyone explain me? ठीक है, एक बार देखने दो maximum frequency character. Pair sum divisible by k. I think I've explained it, but we can do it again if you want. Guys, tell me what is maximum frequency character? Can anyone just unmute yourself and let me know what is the maximum frequency character? It will be great. Hello, Chanchal. Hello. Bhai, batao. The question was saying that there is a string, for example, ABBC. So the character which is having the maximum frequency, we have to show that particular character
but if there are multiple characters with same frequency, so we Uh-huh. have to show the minimum lexicographical character. Okay. In other words, we can say the character which is having the minimum ASCII value. हाँ समझ गया, मतलब B is less than C, right? Yeah. So मैं समझ गया. Cool. So कैसे किया तुम लोगों ने? What were the approaches? This approach was totally simple. Just we have calculated the frequency of the character, but the minimum lexicographical character was we was unable to do. So 3 test cases was failed. Okay. Okay, cool. So like how did you do the maximum frequency wala question? Like you created a hash map and you Yes. created that thing, right? Okay, Yes. cool. So for this you can you need to use the sorted hash map, but or else you can think of any way without using the tree map. Like कुछ सोच पा रहे हो क्या? चंचल एक बार बताओ. we as अभी तक आपने जो सिखाया है हाँ उसमें से एक बार frequency, बताओ. we just use frequency map and बस प्रॉब्लम वहीं जा रही ही उदय कि हाउ टू शॉर्ट द हैश मैप अच्छा गेट द मिनिमम. अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीपल है, तो तुम Yes. उसमें से सबसे मिनिमम ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? So for that we have to store the values in some in array or array list to get the minimum ASCII value character. मैं समझा नहीं. एक एग्जांपल देना प्लीज. For कोई example, there is A triple B triple C. A ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ठीक है, Okay. एंड डी, दो डी दे दिया, ठीक है, ठीक है, Okay. एक जेड भी दे दिया, ठीक है. तो द हैश मैप दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट इज A मैपिंग टू 3, B मैपिंग टू 3, C मैपिंग टू 3 and D mapping to 2, correct, and Z Cool. mapping to 1. Okay. Okay. So I'm not saying these are sorted, but it might look sorted here, but they are not necessarily sorted. Okay. So Okay. let me put A here. Okay. Is that cool now? Okay. Right? Because I just taught you the hash map. Okay. So there's something called tree map. Okay. जिसमें values will be sorted. Okay. Values will be sorted, but there's another dynamics that will happen in background. Okay. For now, I can just teach you कि it is there, it is working, but I don't want to do that without telling you the dynamics behind, right? So that will be done when you learn the trees. Okay. Anyway, cool. So right now, so how are you finding what is the maximum value? What? What is the maximum value? Like what is the character with the maximum value? How are you finding it? No, by just saving the value in a variable named with answer. I just run the loop from I is equals to 0 to I is less than is equals to the array size, and after that inside that particular loop I was doing a if operation. ठीक है, मतलब अरे ऐसे implement देखो, जब मैंने ask you a question, try to explain only the solution, don't explain the implementation. मतलब एक चलाओ. टाइम मैंने एक खाली कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया था और एक खाली इंट मतलब एम्प्टी इंट वेरिएबल लिया था और उसको मैंने इफ के अंदर कंडीशन लगाई थी इफ करंट जो अभी कैरेक्टर आ रहा है अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर वैल्यू से बड़ी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक वैल्यू में स्टोर करना और मैक्सिमम जो एक मैक्स कैरेक्टर लिया था जो मैंने एम्प्टी कैरेक्टर उसके अंदर वो कैरेक्टर को सेव कर देना. Correct. So okay, great. So Chanchal, let me summarize what you just did. You created a hash map. Okay. Yes. Let me just tell me if I'm going in the right direction. Created a hash map, which is mapping a key to its frequency. Okay, मतलब character to its frequency. Correct. Yes. So the second thing you did is iterate the hash map. Yes. Right. Iterate the hash map and check for maximum. ठीक है. Yes. For maximum value not key. ठीक है. Of each key and update value, मतलब update the max as value. Yes. And after that returning that max character value. Answer max as character. Yes. Like एक और statement लगा सकते हैं ना कि if at all maximum value is equal to the maximum value, मतलब
यहाँ पे 3 आया तो वापस 3 आया, ठीक है, ठीक है, एक बार सोचो इसके बारे में, ठीक है, इफ mp डॉट गेट की इज ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू, है ना, यू आर अपडेटिंग द मैक्स वैल्यू, देखो मैं सही कोड लिख रहा हूँ नहीं बताओ, यू आर अपडेटिंग द मैक्स Yes. वैल्यू, ठीक है, as well as you are updating the answer as the key, correct? Yes. This is the code you are writing. Why don't you Yes. write one more statement like if mp dot get, मतलब else if लिखना, else if mp dot get key is equal to the max value, equal to the max value बता रहा हूँ, ठीक है? Yes. In this case, अगर if key is less than the, like key is less than the current key, why don't you update that answer? इसके बाद like ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट होगा else if में, Else if. क्यों? ये एक वे हो Yeah, गया, yeah, we can do it. मतलब Yeah, 3 we can do इजी it. 3 इक्वल हो गया तो लाइक सबसे मिनिमम वाला आ जाएगा ना, इफ दे आर सेम, जस्ट वन Yeah, पॉज, yeah, yeah. इट इज नॉट चेंजिंग एनी टाइम कॉम्प्लेक्स। लेकिन गाइस लेट मी टेल यू, अगर तुम लोग ट्री मैप यूज करोगे, हर एक लाइक यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग इन बिग ऑफ वन टाइम, राइट, each query operation is taking big of one time, agreed चंचल? Yes, yes, yes. यहाँ पे बिग ऑफ वन नहीं लगेगा, यहाँ पे लॉग एन लगता है, पता है ये चीज तुम लोग को? Just because it is sorted, na? तो तुमको सॉर्ट की जरूरत ही नहीं है, सच बताऊं तो, देखो ना, यू जस्ट नीड टू गेट इट, ठीक है? एक और मेथड बताता हूँ, लाइक ये एक मेथड मेरे दिमाग में आया, ठीक है? दूसरा मेथड ऐसे भी हो सकता है ना कि इफ यू क्रिएटेड अ एरे ऑफ साइज 26, एक बार सोचो इसके बारे में, 26 का एरे क्रिएट कर दिया ब्रो, ठीक है, एंड इफ यू डिड द सेम थिंग लाइक फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर एरे, फ्रीक्वेंसी एरे, राइट, मतलब 0 विल बी पॉइंटिंग टू ए, 1 विल बी पॉइंटिंग टू बी, 2 विल बी पॉइंटिंग टू सी, है ना? समझ गया ना ये चीज? Okay. हाँ, हाँ, हाँ. राइट, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसा होने वाला है? यहाँ पे 3 होने वाला है, यहाँ पे 3 होने वाला है, यहाँ पे 3 होने वाला है, Z पे 1 होने वाला है, राइट, एंड उसके बाद क्या, A B C D, हाँ, D में 2 होने वाला है, ठीक है? जस्ट रन द लूप, whichever is maximum, just store the same thing. अभी तो तुम्हें वो भी करने की जरूरत नहीं है। Yeah, Don't you right. think this is better than a tree map? Yeah, obviously it is better than the tree map. Right? यहाँ पे कितना लग रहा है? बिग ऑफ 1 में तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे Big of one में हो गया. log n लग रहा है, Log n लग रहा है. n queries करोगे, it is big of n, यहाँ पे big of n log n लग रहा है, right? N That log will n. be noticed, maybe might not be noticed by the compiler, दोनों सही आंसर बोल देगा, but this will be noticed in the interview. Yes. तो मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं चीजें पता है उसके साथ तुम कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, right? So see, this is a kind of sorted way, man. Like this is a kind of sorted hash map for you. Don't you agree? Like Yeah, the yeah. implementation of this. ठीक है? Yeah, yeah. कैसे करोगे? इसमें like character minus a plus plus है कि Yes. नहीं? बस हो गया? Yes. The sky value of A will get minus with the current character. नहीं, correct character नहीं, why a only? अच्छा, हाँ, मतलब the correct CH character is the will be, current character which is coming, na? हाँ, correct character in the string, जिसका तुम frequency map करो, it will be minus by the a का value, so that हाँ. like they will be falling in this range of 0 to 26, 0 to 25. Okay. Making sense? Yeah, yeah, it's making sense. बस let me see the chat, man. काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है इसका बताओ भाई? What is time complexity, bro? Chanchal? Yeah, it's big O of 1. No, it's not big of 1. Constant होगी ना 26 तक में. नहीं, पूरा algorithm का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया जाता है ना. Big O of 26. नहीं, it will be big of n, bro. N क्या है? N is the length of the string, ना. You are creating. Okay, we are traversing through full string. हाँ, you are creating hash map ना, मतलब frequency character ना, frequency array ना. Yes, अगर ये yes, yes. frequency array खत्म, like to traverse this frequency array, it is take 26 steps. That is constant. Okay, I agree with you. But what I'm feeling is कि you're traversing the whole string to get the time complex as big of n. So that is it. Agreed? Yes, yes. Correct. बस, और कुछ डिस्कस करना है guys?
Correct, Pawan? Arundhati, let's skip tree map. ठीक है, I didn't teach tree map yet. ठीक है, don't go for tree map yet. ठीक है, whatever questions you're getting, I showed you that every question you're getting can be solved with this. ठीक है, if at all it is not solved, it could not be solved with this tree map. ठीक है, so it means that कुछ गलती हो गया हमसे, मतलब हमसे in the sense कि by giving that question. ठीक है, but देखो, like even using a hash map also you can do the same question by just maintaining one more clause like this, or you can create a frequency character which will be traversing and which will be telling what is the frequency. What is the point of just having strictly using the hash map only? Correct, we can do it in this method or you can do it in that method as well, है ना? Agreed, guys? Anything else, guys? Anything else? Use hash map to store the frequency and use the key set to देखो Pushpati, I think key set to key set not necessarily will give you an correct answer, na bro? Like if there are negative elements, then you can't get it, right? So don't do that. Okay. Yeah, Mohit, you can compare two characters directly. Yes, you can compare them. Okay. Unique element में क्या है? What is unique element, man? Can anyone just raise your hand? I can explain me the question. मैंने तो नहीं देखा यार, ये क्वेश्चंस मेरे लिए सरप्राइज है, मतलब तुम लोग बोल रहे हो यूनिक एलिमेंट क्या क्वेश्चन है? शिवम will explain me. नहीं, बेसिकली मेरे को इससे पुराने वाली अप्रोच में पूछना था जो आपने फर्स्ट अप्रोच बताई है। हाँ, हाँ, तो उसमें आंसर इज ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। आंसर इज ग्रेटर देन होना चाहिए। मैं गलत लिखा क्या? अच्छा ठीक है, मतलब अभी जो करंट आंसर है, इफ दैट की वैल्यू इज ग्रेटर देन द की वैल्यू, ठीक है, so they are basically ASCII values, right? When they are comparing, right? So B will be greater than A, so this will return true, so it will get updated to A, correct, with the same max value. ठीक है, my mistake, thanks for pointing out. ओके ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या एक बार बता देना, यूनिक एलिमेंट्स क्या क्वेश्चन है? I think someone has just started. Hello. Yeah, hi Pooja. Hello, sir. Uh-huh. So the question was, we were given an array and we were to print all the unique elements in array. They were given the array with duplicate elements and we only have to print the unique elements in that array in ascending order. Okay, cool. Yes. So what is the range? Like what is the constraints? Constraints, actually I have only took the image, so- Constraints क्या है? ये बताओ मुझे। Constraints तो मैंने नहीं लिए थे सर, एक इमेज लिया था उसमें। तो कैसे किया तुमने? मैंने तो अप्रोच किया था सर के पहले उसका हैश मैप बनाया था। पहले अरे को सॉर्ट किया और फिर उसका हैश मैप बनाया और जिसका देखो एक सेकंड, तुमने सॉर्ट किया, फिर हैश मैप बनाया, फिर क्या किया? और फिर उसका जिसका वैल्यू लेस देन मतलब इक्वल टू 1 था, तो सबको मैंने प्रिंट कर दिया। तुम एग्री करते हो तुम्हारा अप्रोच n-log n है? हाँ, ओके, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द करेक्ट वे। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में था तो इसलिए पहले ही सॉर्ट कर लिया। हाँ, समझ गया। हाँ, तो और क्या मेथड हो सकता है गाइस, बताओ? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? और क्या मेथड हो सकता है इसका? पहले हैश मैप बना के अरे में ये कर लेंगे, अरे में एलिमेंट्स लेंगे, जो भी यूनिक एलिमेंट्स है वो, उसको वापस सॉर्ट करोगे? तो यही कर सकते हैं ना सर, एक तो पहले सॉर्ट कर सकते हैं तो बाद में सॉर्ट कर सकते हैं। बाद में सॉर्ट करने का कोई फायदा है? क्योंकि
कीज तो हैश मैप में से सॉर्टेड इसमें नहीं रहेंगी, तो बाद में सॉर्ट करना ही पड़ेगा। देखो अच्छा ठीक है, कूल। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लाइक यू गाइस आर करेक्ट। ठीक है, हाँ। सो लाइक अगर तुम बाद में करोगे क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज आया तो पूछो। हम्म, हाँ बाद में करेंगे तो शायद, हाँ तो कम हाँ। लगेगा, क्या कितना लगेगा? क्योंकि जितने यूनिक है उतने ही एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। पहले तो हम पूरा का पूरा अरे सॉर्ट हाँ कर हाँ रहे थे। ठीक है, तो कितना तो कितना कितना होगा फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो डिपेंड्स करता है सर, कितने यूनिक एलिमेंट्स है इस पे डिपेंड हाँ करता तो लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? है। बिग ओ देखो, पे नहीं लगेगा, नहीं मतलब देखो, एन लॉग एन लगेगा ना। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ whatever you're talking about time complexity, you're talking about the worst case. या Agreed? तो इट डजेंट मैटर कि इसमें एन लॉग एन है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि एक्चुअल में कितना में लगा, कितना इटरेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है, वर्स्ट केस हाँ यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? यस सो वर्स्ट केस क्या हो सकता है इसमें कि सब एलिमेंट्स यूनिक है, हाँ मतलब ऐसे हो सकता है ना, 1 2 3, यस यस 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 10,000 तक हो सकता है ना। हाँ तुम देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी 10,000, यस ठीक, यस एंड वैल्यूज कैन बी 10,000, ठीक है। यस सो सब एलिमेंट्स वो हो सकता है ना, यूनिक हो सकता है, सो दैट इज द वर्स्ट केस। तो यस वर्स्ट केस में ऑल द वैल्यूज को वापस तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा, दैट इज एन लॉग एन, यस बस। ओके ओके, चलो नाइस। ओके तो लाइक मेरे हिसाब से देखो यार, ये हैश मैप में ना पॉजिटिव वैल्यूज आर सॉर्टेड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो इफ एट ऑल ऐसा है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग सीधा ही कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा सही, मतलब लाइक जस्ट सी दिस क्वेश्चन, अगर कर पा रहे हो तो सही है, वरना वी कैन टेक इट लाइट, ठीक है। तो एक बार सोचो इसके बारे में, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोचो इसके बारे में, आई सेंड यू द लिंक। मुझे लगा दिस वाज आस्क्ड इन योर कोर्स, ठीक है, इन योर कैन बी अरेंज्ड इनटू अरिथमेटिक सीक्वेंस, या विल सी दैट। हाँ, I'll do that, पेयर सम डिविजिबल बाय k का भी करते हैं मोहित। या श्योर रोहन, वी कैन डू दैट। हाँ, जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन गाइस, आई पुट इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ग्रुप शिफ्टेड स्ट्रिंग एक बार देखना कैसे करना है, अगर कुछ सोच पा रहे हो तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम एक बार सोच लेंगे, ठीक है। ठीक है, आई सेंड यू ऑल द लिंक्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे मोहित, डोंट वरी, ठीक है। 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी इसके बारे में सोचो, ठीक है। आई जस्ट मतलब 5 मिनट्स, एक बार तुम लोग के लिए सोच दिया, राइट। I'll send all the links in the doc, don't worry, ठीक है, but do this।
या हाय गाइस, कोई कुछ सोच पाया इसके बारे में? हेलो? ओके, जिसको डिस्कस करना है या जिसको क्वेश्चन भी पूछना है ना, ठीक है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस. ठीक है, तो देखो यार, यू आर गिवन स्ट्रिंग्स. ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब जो तुम लोग को पता है. So you guys know what is the array of strings, right? So it is, you are given something like this. Okay, so just let me write it. Though nothing is so difficult that you don't even understand. Okay, so तुम देख सकते हो कि questions बहुत simple, like you just need to break the question in a clear way and then apply whatever is required. Okay, so that is what it takes. Okay, so देखो, let me just scroll down and let me just write them. So you have an array of strings ACD, DFG, WYZ, YAB, MOP, PF, ये सब है, and A है क्या, X एक है, right, and then MOQS, right. So this is the, like these are the array of strings that are given to you. ठीक है guys? So you are supposed to return, yeah, right. So you are supposed to return, the same group elements. Like it's like कि तुम पहले किए थे, if you remember guys, it's like a similar question, है ना, जिसमें list print करना था ना, list of strings, right. So you're supposed to print a lists of strings, right. It means that each list has its group, मतलब group anagram question की बात कर रहा हूँ, right. What is there in that? All the strings that are anagrams should be grouped together and put into one list. Okay, and you're supposed to print those lists, right. So it's a similar question. Okay, but यहाँ पे it is not anagram grouping, it is something else. Okay, so what is that something else? Okay, it says that कि A, okay, they say that A and X belong to the same group. So this A is a string and X is a string, they belong to the same group, right. In the same way, ACD, DFG, WYZ, ठीक है, YAB, MOP, they say that these are of the same group, right. उसके बाद क्या है, BF, DH, MOQS, right. They say that these are of the same group, right. So my question is कि how they are grouping it. ठीक है, so the group ऐसा कर रहा है कि इस वैल्यू को कुछ वैल्यू ऐड करो तो लाइक ये सब जनरेट होंगे. ठीक है, so I'm just wondering what is that thing. ठीक है, so let me just go to मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे. So let me just take GDB online compiler and let me just kind of explore this thing कि what is happening. तो थोड़ा अजीब चीज बता दिया इन्होंने, right. So let me just check that if you have a string S that is equal to ABC, right, and if you're printing S plus 1, क्या होने वाला है, like S plus K की बात हो रहा है ना. I can see some, yeah, अच्छा 1 print हो गया, okay, so I don't want to concatenate this. ठीक है, so how do they do it? I think they're shifting actually. See guys, they are kind of shifting this. ठीक है, so basically मैंने ये चीज देखा कि यहाँ पे you can see that
A C D, ठीक है, just look at the differences. कुछ नजर आ रहा है क्या? Like what is the difference between these two elements? It is 1, right? What is the difference between these two elements? It is 1, it is 2, right? तो यहाँ पे भी देखो, the difference between these two is 2, difference between these is 1, right? F and G, W और Y में, ठीक है, it might be looking W X Y, है ना, तो 2 है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 1 है, एग्रीड। तो यहाँ पे देखो Y Z and then A, right? So it is moving in a circular way, right? A B C D वैसे वैसे आके Z, उसके बाद A आएगा, करेक्ट, Y के पहले, राइट? So you can see that ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 है, but if you just actually do the subtraction, ठीक है, A का X का वैल्यू एंड इसका X का वैल्यू, you will be getting some value like -24, I guess, है ना? तो I need to do kind of modulo it with 26 basically, मतलब इसको ऐड करो तो 2 आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे भी you can see that difference is 1, यहाँ पे भी देखो M and O difference is 2 and this is difference is 1. Just see this guys, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? B और D के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, F G H यहाँ पे भी 2 है, करेक्ट, M N O 2, O P Q, right, 2, Q R S 2. Yeah, Rohan, tell me. Sir, I did this question in that group of anagram way. हाँ. So हाँ, first बस of देखो, बात ऐसी है, एक सेकंड रुकना, ठीक है? So what I'm saying कि you're shifting it, right? Plus K का मतलब you're shifting it, right? So you can see that like यहाँ पे these guys have added 4 values, है ना? A is been added, मतलब 3 values add हुआ, है ना? B C D हो गया, यहाँ पे C also been added by 3 values, यहाँ पे D is also been added by 3 values, right? लेकिन ये आपस में differences तो same होंगे, like यहाँ पे difference 2 है दोनों के बीच में, right? यहाँ पे भी difference तो 2 ही होगा, the same way C और D के बीच में difference 1 है, F और G के बीच में difference भी तो 1 होगा, correct? Like you're adding one value to all the characters, but the differences among themselves will be same, correct? Rohan, agree करते हो? yes. So this is what they are asking कि जो same है ऐसा, right? Just group them as one, ठीक है? तो like group anagrams में you're using something as a key that is the sorted value, correct? Because that will identify all these values, right? But यहाँ पे don't you think this will act as a key, Rohan? Can we do in that way that to find the length of the string and then make it a key, and then whenever the same level of whenever we are getting the same length, we will add that value in the list of the value. It's not just based on the length, na. See, यहाँ पे ABC हो गया. If at all there's another value called ABC into the string, you won't add it here. Agreed. So the actual thing that is defining them is the difference between the characters. Agreed. Hmm. So this could be acted as a key. Yeah, first, second, primary key you can just take it as key. मतलब length same होना चाहिए, length and all, ठीक है? But don't you think this will act as a key, actual key? क्यों bro? Means the repeated it's supposed to strings are repeated, so we don't have to add that. Means if it is there already, like just let's say A C D is available 2 times, so the second time we don't have to add it. A C D, I think it won't be available 2 times. अगर होगा भी तो it's fine, right? Like you are just identifying the group by the differences between these things, ठीक है? Okay, this is So like if alphabetical you, also. हाँ, so yeah, it should be alphabetical, right? So if at all you found out something, like if at all you make this, if at all you are able to create this, कैसे create करोगे? Iterate to the string, ठीक है? Each string के पास जाओ, differences find करो, तो differences को like put it as a key, ठीक है? तो 2 space 1 की तरह, right? So this will act as a key. So I can think of a hash map where you're having a string that is the differences and then a list of strings. This is similar question to the group anagrams जिसमें string sorted value हुआ करता था. यहाँ पे it is differences between characters. Don't you agree with me, Rohan? Yes.
It's not just the length of them. Okay, it is this particular thing. Can there be multiple strings with same difference? Yeah. See, there are. So this is a string. This is another string, but they have the same difference, right? They are different strings. Don't you think, Mohit? So this could be a good question. ये hashing का question करके realize करने में, you need to first figure this out. It's like a puzzle. कि ये सब में common क्या है? Common ये है कि ये सब में differences same है. तो इसको मैं key की तरह generate कर पाया, ठीक है? How cool is that? मतलब differences कैसे करूँगा? यहाँ पे देखो, a minus y, it will give you minus 24, है ना? So if at all there's any number that is negative, you can just add 26 to it. बस हो गया. Like that will make it in a circular way. Guys, कैसा लगा ये क्वेश्चन बताओ? है ना? Yeah, do give it its मैं implementation तो नहीं बता रहा, but all I can say is कि देखो यार, मतलब like if at all the based like if at all this है, ठीक है? मतलब if at all you are able to generate the difference between two characters, and if you are getting something, if you are able to add it into a string, ठीक है? And if you are able to generate a key for that, and the next time if another string comes, and if you are doing the same thing, ठीक है? And you got the same key, ठीक है? Just add it to that list, ठीक है? You can, yeah, sure. You can do that, Reni. You can have an array as a key to the list of strings. Yeah, you can. लेकिन एक स्ट्रिंग बना लो ना, like string will be much easier. तुम कर सकते हो वो चीज, no one will stop you, ठीक है? या लोग ऐसे करते हैं कि whatever the difference is, उसका corresponding, like they'll just add a to it, ठीक है? So that like 2 will be represented as b and 1 will be represented as a and all these things, ठीक है? So you can do that, but this is an identifying thing, ठीक है? So right, so what I'm saying is कि see this question, ठीक है? The group anagrams question, उससे मैं 80% of the code same लिखूंगा group anagram से, और इसमें 80% of the code is same. Only 20% is how you're getting the key here. यहाँ पे key कैसे कह रहा हूँ? Sort the string. But in this question, ठीक है? In this question, find the difference key. Find the difference in character key. Correct? So try this thing, ठीक है? Like it's a good question, ठीक है? So you just need to realize this thing, कि how you're using a string and mapping a list of strings, ठीक है? Similarly, creating a string and then mapping all the list of strings in that. And if you found any string that is giving the same string, you'll add it to that list. Agreed, Saurabh? Correct, everyone? चंचल तुम्हें समझ नहीं आया, मतलब यार like this question मैं properly इसीलिए समझाया नहीं कि I'm just giving you guys the hints कि how to think about this thing. So if you want to unmute yourself, एक बार कर लेना. चंचल, I'll explain you. एक बार raise करो hand. Okay, अच्छा clear नहीं हुआ. Okay guys, देखो मैं तो expect करता हूँ कि you guys are supposed to try this thing, ठीक है? So if you guys realized how grouping anagrams, so grouping anagrams समझ में आया चंचल तुम्हें? हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए. एक्चुअल में देखो समझ में नहीं question, आया क्वेश्चन. okay, cool, no worries. See,
क्वेश्चन में यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ एरेस, सॉरी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, यू आर सपोज टू प्रिंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन ईच लाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट किया, द नेक्स्ट लाइन कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट किया, द नेक्स्ट लाइन कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट किया, ओके, ठीक है। ठीक है। तो उसमें कुछ कॉमन है, लाइक जो भी लाइन में प्रिंट कर रहे हो ना उसमें उस स्ट्रिंग्स में कुछ कॉमन है, मतलब वो सब एक ग्रुप के है, ठीक है। ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट की तरह, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब एरे लिस्ट की भी लिस्ट। हाँ, so basically list of strings, see this is a list of strings, agreed, ठीक है। right? So this is a list of strings, right? And this is a list of strings and this is a list of strings. Don't you think these three are a list? ये ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन हाँ, सा हाँ, तो वो थोड़ा, एलिमेंट? हाँ करेक्ट, तो तुमने सही क्वेश्चन पूछा, राइट। तो उसी के लिए तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या मतलब है इसका, क्या हो रहा है ये, मतलब ग्रुप का मतलब क्या है। देखो एक बार ग्रुप का मतलब पढ़ के एक बार देखो कि इन्होंने बोला कि if two strings, देखो given an array, your task is to find a group in such a way that they are all strings are of shifted versions of each other, right? ओके, शिफ्टेड मतलब- वर्जन मतलब हाँ, two strings s and t are called shifted if दोनों का लेंथ सेम है, ओके। ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। देखो यहाँ पे लिखा है शिफ्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये इन्होंने बोला कि लाइक द लेंथ इज सेम, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राइट। उसके बाद लाइक जो भी वैल्यू है इट इज शिफ्टेड बाय ए कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यू कैन सी दैट ए सी डी एंड डी एफ जी, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, +3 ना, या +2 आई गेस, या +3 हो गया ना। दोनों की लेंथ 3 है। नहीं नहीं, दोनों की लेंथ की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट ए एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डी। समझ में नहीं आया, +3 देखो, कैसे हो? इसका एस के वैल्यू क्या है? 97। 97, इसका 100 है, अच्छा, इसका 99 है, इसका 97 क्या है? मतलब 97 माइनस 100, 3 की डिफरेंस है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये +3 हुआ ना, 97 + 3 100 10। सो इन द अल्फाबेट्स ए के बाद लाइक अगर तुम ए को +1 करोगे बी आएगा, एग्री करते हो? ठीक है। बी को +1 करोगे सी आएगा, तो ए को +2 करोगे तो सी आएगा ना, ठीक है। ए को +3 करोगे तो डी आएगा ना। हाँ लाइक सिमिलरली ये देखो 3 है, राइट। सी और एफ में कितना डिफरेंस है? अगेन इट इज 3, राइट। डी और ठीक जी है। में भी 3 है डिफरेंस, तो दे आर शिफ्टेड बाय द वैल्यू के, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। के कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है फॉर्चुनेटली, मतलब कोई भी वैल्यू, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वैल्यू कोई भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 3 2 का कॉम्बिनेशन होता, मतलब A3 नहीं ऐसा नहीं होगा, सब कांस्टेंट ही है, मतलब पूरा ही स्ट्रिंग कांस्टेंट, मतलब सेम कांस्टेंट मूव हो रहा है, एग्रीड। ओके ओके। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट होगा ना। सी ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है। तो इफ यू शिफ्ट देम लेटरली, एक बार शिफ्ट किया तो तुम इसमें भी +3 किया, इसमें भी +3 किया, इसमें भी +3 किया, तो ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 ही होगा ना, जैसे ये दोनों में था। ठीक है। इसमें भी 1 होगा ना डिफरेंस। तुम देखो देखो ये वैल्यू है कुछ 98 है, सॉरी 99 है, ये पे कुछ और वैल्यू है लाइक दैट इज 102, यहाँ पे 103 है, बट यहाँ पे यू हैव 100, राइट। सो यू कैन सी दैट ये दोनों के बीच में डिफरेंस is nothing but ये दोनों के बीच में डिफरेंस because they are shifted by the same amount of value, agreed। ठीक है। तो क्या मैं इसको एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर बता सकता हूँ कि ग्रुप का, कि ये दोनों एक ग्रुप के है हो गया अभी, बिकॉज दे आर शिफ्टेड बाय द सेम वैल्यू। अगर +2 से शिफ्ट हुआ, लाइक कुछ और वैल्यू से शिफ्ट हुआ, +2 से हुआ तीनों, लाइक दे विल बिलोंग टू द डिफरेंट वैल्यू। मतलब आई मीन टू से कि देखो शिफ्ट सब एक ही वैल्यू से होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे +2 से हो गया, लाइक इट कुड बी पॉसिबल दैट ACD कैन बी शिफ्टेड विद द वैल्यू 2 के लिए करेंगे तो क्या होने वाला है
it is going to be C E and F. ठीक है, so this is another value. तो तुम देख सकते हो दिस गाय शिफ्टेड बाय द वैल्यू 2, लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो देखो 2 और 1 ही तो है. ठीक है. So whatever strings are having the differences of the consecutive characters as the constant value, यहाँ पे 2,1 है, यहाँ पे भी 2,1 है, यहाँ पे 2,1 है, ये तीनों एक ग्रुप के हैं. Like that one, that thing I confirm. नहीं, ये कंफर्म है ना उदय भाई की मतलब जो कैरेक्टर्स हैं जैसे A C F और D F G, ये या तो 3 से शिफ्ट हुए होंगे या तो किसी भी 2 या 4, सब या तो 2 से होंगे, सब या तो 4 से होंगे, सब या तो 3 से होंगे. करेक्ट. एक कांस्टेंट वैल्यू से. करेक्ट. तो जिसके वजह से डिफरेंसेस में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आपस में जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स के बीच में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. राइट. ठीक. लाइक सब लेटरली शिफ्ट हो रहा है. मतलब यहाँ पे देखो, लाइक इन दिस एग्जांपल यहाँ पे 2 से शिफ्ट हुआ +2 से, हर कैरेक्टर विल बी शिफ्टेड with a +2 difference, right? So with that, so the differences between the characters won't shift. So can I use this as a key? ठीक है. Can I use this as a key? Right? So single character के लिए all the single characters belong to the same group क्योंकि कोई और difference लेने के लिए है ही नहीं, right? So like A is shifted by X, so it is shifted with some values like 24 or something. 20, right? So ये सबको तो एक में डाल ही सकता हूँ, right? But what I'm talking is about this thing. ठीक है? The differences between the characters is constant for the values that are in the same group. Agree करते हो चंचल? हाँ बिल्कुल. तो बस वो डिफरेंसेस को की तरह यूज करो और ग्रुप एनाग्राम्स की तरह करना है क्वेश्चन को. Correct. Mohit, so you don't have to check the difference between two characters of the two strings is same. You can do it in a way कि difference between two characters of the same string, and if at all the same thing is constant among all the things, ठीक है, among other string also, just put it in the different in the same group. For example, BDFH देखो, ठीक है, एक और है MOQS, right? So BDFH में what is the difference between these two things? It is 2, right? ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस EFGH, राइट, 2 है. एग्रीड, राइट? सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 है. सो इफ एट ऑल यू आर गेटिंग अ स्ट्रिंग विद द साइज 4 एंड विद द डिफरेंसेस 2 to 2, and if you got another value with the size 4 and differences 2 to 2, then can I say they both belong to the same group or not? चंचल, बस वही हो गया, क्वेश्चन हो गया. That is the question, guys. So it is similar to the group anagrams, जहाँ पे कि like group anagrams में you have the sorted string as the key, यहाँ पे you have the difference character as the key. तो इसको तुम character की तरह यूज कर सकते हो, इसको string की तरह यूज कर सकते हो, right? You can do whatever you want, ठीक है? लेकिन like the moment you encounter another string is also having the same thing, ठीक है? Just put them in the same list, बस इतना ही है. Cool. Guys, बताओ. इसको कोड तुम लोग करो यार, मतलब लाइक इफ आई कैन इजीली डू इट, ठीक है? लाइक ग्रुप एनाग्राम्स की तरह ही है, मतलब 80% कोड सेम है, बस डिफरेंस ये आता है कि की जनरेशन में, बस की जनरेशन में डिफरेंस आता है. वहां पे सॉर्ट करके की जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ. डू इट, ठीक है? तुम लोग कर सकते हो. अगर नहीं कर पाए तो मैं कल अगले दिन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, shall we move? हेलो, लाइक यू गाइस कैन डू इट. मतलब ग्रुप एनाग्राम्स का एक बार कोड देखना अच्छी तरह से कि कैसे की जनरेशन हो रहा है. द सेम कोड यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है? सेम, लेकिन की का जनरेशन डिफरेंट होने वाला है. वहां पे सिंपल है, बस सॉर्ट कर दो कैरेक्टर एरे को. यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा.
तुम लोग को। कैसे करोगे सोचो एक बार, ठीक है। ये लेंथ का भी सीन है, तो वो भी सोचना कैसे करोगे। पेयर सम डिविजिबल बाय के, ओके। ये इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार बता देता हूँ। सो हाउ कैन यू हैव अ डिफरेंस एज स्ट्रिंग। सोचो ना एक बार रिदम, मतलब रैथिन रेनी, डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। मतलब ऐसे करो, कैरेट आई माइनस एस डॉट कैरेट आई माइनस वन, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस जो आती है, ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ नंबर, ठीक है, इंट सम आई, ठीक है। व्हाई डोंट यू ऐड इट एज अ स्ट्रिंग में, व्हाई डोंट यू ऐड इट इनटू अ स्ट्रिंग, मतलब एस प्लस आई प्लस ए ऐसे कुछ कर दो, माइनस वन या समथिंग। सो दिस विल काइंड ऑफ क्रिएट यू द स्ट्रिंग, राइट, ऑफ दीज वैल्यूज, करेक्ट। जैसे मैं इसमें दिखाया था कि इफ यू डू प्लस वन हियर, if you do plus one here, it will just get appended, right? ABC 1 हो जाएगा, तो plus 2 करो तो ABC 2 हो जाएगा, right? So you are kind of generating the string. Don't you agree with me? देखो 1 आया, तो like if I do something like यहाँ पे 1 है, and if I do another one plus 1 here, right? यहाँ पे 1 1 हो गया, right? If I do plus 2 here, ठीक है, let me run it, right? 1 2 हो गया, right? यहाँ पे समझ लो 4 है, तो 1 4 2 हो गया, सही है ना guys? So you can generate it, ठीक है। कुछ स्पेस वेस भी लगा देना, you can generate it, ठीक है। मतलब after every character you can just introduce a space kind of thing, ठीक है। मतलब you can just do something like this as well। देखो 14 plus 2, right? So 1 4 2, in that way also you can do it। See, it is a string, now this is a string, ठीक है। So you can use this as a key। Cool guys। Shall we move forward? Shall we do this question? Pairwise sum divisible by k। कितने लोगों ने नहीं किया ये क्वेश्चन? जस्ट रेज योर हैंड। करेक्ट प्रशांत, करेक्ट। There are some participants that have raised their hands. I think Chanchal, yeah. Hello. I raised hand just because I didn't done this question. Acha, acha. So did you try this question? How to do this? आप एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दीजिए, फिर ट्राई करके देख Okay. So you have an array. Okay. Okay. Mute yourself. So you have an array, right? You are given an integer k, right? You are supposed to calculate the number of pairs, okay, whose sum is divisible by k. ठीक है. Cool. Sum is divisible by k. क्या मतलब है इसका? मतलब a plus b modulo k is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ ना guys, करेक्ट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट आस्किंग, कि a मॉड्यूलो k प्लस b मॉड्यूलो k इज इक्वल टू 0 करके। How many of you can write this in this way? Right. So what is a modulo k? It is the reminder that we are getting if we divide a by k, and b modulo k is nothing but a reminder that we are getting if we divide b by k। Agreed? है कि नहीं guys? Right? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार सोचो यार, मतलब लाइक ये टू सम प्रॉब्लम की तरह तो नहीं हो गया? सोचो इसके बारे में।
देखो, what I'll do is, so basically let me just take an example and show you कि कैसा है ये question, right? So यहाँ पे sample input है this one, right? 5 4 1 2 3 4 5. ठीक है, 4 is the k value, ठीक है, 5 is the n value, and this is the array. ठीक है, so you can see the sample output 2 है. ठीक है, कैसे? What are the pairs that are divisible by 2? You can see that. What are the pairs? Tell me. Yeah, 1,3, that is one pair, right? And 3,5 is another pair, right? So what I'm thinking is, you just see this, कि if at all I created, देखो मैंने ये expression लिखा है a modulo k plus b modulo k is 0. It means that these are nothing but they sum up to k, right? What does it mean? a modulo k plus b modulo k is equals to k. इसका मतलब यही हो ना, k modulo k is 0, right? देखो, when you do a modulo with a number, ठीक है, the result can be from the range of 0 1 2 till the k minus 1. Do you guys know this thing, guys? Correct. So the sum of these two things should be k. That is the question. So it is like a two sum problem. Okay, so for every question, like for every this thing, okay, just find the what is the number modulo k. मतलब 1 modulo 4 is 1, right? So I'll just create a hash map that is telling what is the modulo of that. Okay, so if 1 modulo 4 is 1, so I'll just mark 1 as 1. It is occurring one time, right? So if 2 modulo 4 is 2, right? So you'll just mark 2 as 1. Okay, 3 modulo 1 is 3, so you'll mark it as 1. 4 modulo is 0, right? And 5 modulo, you can see that it is 1 as well, right? So you'll be having 2 here. Agreed, guys? 5 modulo 4 is 1. Correct. So I'm just checking ki like 1 का complementary value क्या है? Like if at all I have 1, okay, now I'll iterate the hash map. Okay, do I have 3 is what I'll check, because I'm just searching for, okay, if at all this is a and this is b, okay, a plus b equals to k तो ढूंढ रहा हूँ in this talking about in this hash map. 1 मिल गया, so I'll just search for b, that is 3, correct, which is exactly the sum, which is exactly the difference between k and this value, correct? Is 3 is present? Yes, 3 is present. So how many pairs can be happened? You will just multiply these two things, correct? So number of numbers that are giving the remainder 2 is this one, okay, that is this value and this value. Number of numbers that are giving the remainder as 3 is only 1, that is this value. So what are the number of pairs that could be possible? Is just multiplying with this two. मतलब ये और ये, you just multiply these two things. So you just check if it is present or not. ठीक है, जैसे 2 के लिए देख लो, 2 के लिए अलग केस है, ठीक है. What about 2? He is बहुत सारे वैल्यूज है जो 2 दे रहा है, जैसे 6 हो गया, ठीक है, तो उसके बाद 10 हो गया, ठीक है. So if at all there is certain like this, ठीक है, so 2 रिमाइंडर देने वाले 3 नंबर है, right? So what are the number of combination that could be possible? Can you guys tell me? Let me create the hash map again. जैसे बस 2 के लिए कर रहा हूँ, 2 के लिए like 3 है, correct? So you can see that this is one value, this is another value, and this is another value, right? So 2 के लिए 3 है, right? So you can't, like, if this value you're searching for 2 again, right? So you can't do 3 into 3 here, correct? So it will be giving you redundant things, right? So you just take NC2, that is n into like n minus 1 by 2. मतलब कितने pairs possible है? This one and this one, this one and this one, and this one and this one, right? Only 3 pairs are possible, correct? So it is not that 3 into 3 and हो जाएगा. So for n by k by 2, you will take it in a very different way.
k by 2 वैल्यू के लिए, and for the 0th value you'll take it in a different way. These are only 2 edge cases. ठीक है, मैं properly समझा है नहीं, ठीक है, because ये सोचने लायक क्वेश्चन है, ठीक है. So try to use your brain a little, ठीक है. How रिमाइंडर मिलने के बाद, ठीक है, how you are trying to find the complement of it, मतलब complement in the sense कि उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कोशिश कैसे करोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मिल गया तुम्हें, सो उसका लाइक व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ k minus i, right? So you just multiply both of them just to find ki just to find the number of pairs that are possible, equals to number of pairs. So you'll do it for all the values, ठीक है, except for k by 2 and except for 2. एक बार सोचना पड़ेगा तुम लोग. I'm not spoon feeding this thing, ठीक है. Chanchal, can you unmute once? Bro, एक बार हैंड रेज करना. ओ मैन, आज हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया क्या? अरे यार. अच्छा, हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है. Cool. I didn't start it manually. I think they have put it an automatic control. हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो फ्लो. ओके, ग्रेट. गाइस कितना क्लियर है ये? How much it is clear? Like try to think, बस यही है लॉजिक, ठीक है. You will just create an array of the size 0 of k size, ठीक है, for k minus 1, and each array का element, each element will store the number of elements that are producing the same index, ठीक है. So you will just create this hash map which is from 0 to k minus 1, and like the frequency of that, like number of elements that are producing the same remainder. Correct. So k minus 1 इसीलिए कर रहा हूँ because like it's like a two sum problem ना. You're trying to find I plus j equals to k. तो j क्या है? That is nothing but k minus I. Correct. You're trying to find the complement of it. For example, यहाँ पे देख लो. यहाँ पे I can explain in a much better manner. Like let's take the other example. Take this particular example. 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So this is the value of k, right? So what are the pairs that are forming it? 1, 5, 1, 2, 2, 4, and 4, 5, right? So what do you think is the 4 modulo 3? बताओ, it is 1, right? What do you think is 5 modulo 3? That is 2, right? दोनों का सम देखो क्या है? 3. यहाँ पे देखो, it is 1. It is 5 modulo 3. कितना है guys? 2. Correct. So ये दोनों का सम देखो, it is 3. ये दोनों तो सेम है, 1, 2 सेम थिंग, right? यहाँ पे देखो, it is 2 and this guy is 1, right? It is 3. Sum is 3. इसका मतलब like if you modulo 2, 2 modulo 3 plus 4 modulo 3, ठीक है, this thing will give 1. I mean this thing will give 2 and this thing will give 1. 2 plus 3 is 3. 3 modulo 3 is 0. So they are sum wise divisible. ब्रो यही चीज है ना, देखो वंडरिंग हाउ इट इज 3 इज कि इसका जो रिमाइंडर आया, इसका जो रिमाइंडर आया, ठीक है, दोनों का सम अगर 3 होगा तब भी तो लाइक इफ यू आर एबल टू डिवाइड इट बाय 3 अगेन, तब भी तो एक्चुअल डिविजिबल हो रहा है ना. करेक्ट. तो इसके लिए भी ट्राई कर लो, इसके लिए भी ट्राई कर लो. 1, 3 एक बोल रहे हो तुम लोग और 3, 5 बोल रहे हो. जस्ट ट्राई टू गेट द मॉड्यूल ऑफ 1 मॉड्यूल ऑफ 4, दैट इज 1. 1 मॉड्यूल ऑफ 3 इज 3, राइट? यहाँ पे देख लो, इट इज 3 एंड इट इज 4, आई मीन 1, राइट? तुम देख लो दोनों का सम 4 होना चाहिए. करेक्ट. नॉट दिस एग्जैक्टली, ठीक है, ये तो बहुत ही
I don't think this is correct. Bro, you're not, see, Balachandra, you're creating the map and simultaneously you're trying to find the answer. Don't do that. Create the map first and then try to find the answer, because for each value, you're trying to map it for all the pairs, right? So it won't give the correct answer. Right? And the other thing is you should be taking care of k by 2 and 2 as well. You should be taking care of k by 2 and 2 as well, right? K by 2 ke liye, it is different, and 2 ke liye, it is different. These are the two edge cases, right? For, I mean, k by 2, sorry, k by 2 and 0, right? So k by 2 में जितने हैं, ठीक है, उतने pairs बन जाएगा, right? You can't multiply it, like whatever the values, you can't do n into n. You need to do n into n minus 2 by 2, because you're just taking the pairs which are not redundant, right? So you can't do something like n into n. You can say that these are unique pairs. No, they are not unique. ठीक है, guys, is this thing cool? Try this again. Same thing I'll say. I'll give you a break of 5 minutes. ठीक है, एक बार try करना तो कर लो, ठीक है, और उसके बाद we can do one more question, or whatever question we left in the class, we can do that and we can just discuss for today. Guys, थोड़ा सोचना पड़ेगा about the edge cases which are left, ठीक है, but this is the whole logic. This is not exactly correct, Prashant, ठीक है, because you're finding the pairs, right? So you should be doing this thing, frequency of I multiplied by frequency of k minus I. So this will give you the number of pairs, ठीक है, यहाँ पे 3 है of this type, यहाँ पे 2 है. Don't you think कि 6 combination बनेंगे 2 into 3 because of this? You should be multiplying these two things and also take care of these two things. Yeah, Raviteja wants to get unmuted. Yeah, bro. In previous problem, This not in this problem. in this problem, I'm little bit confusing on edge cases. क्या confusion है बताओ? Okay, means if our remainder is 0, then we should output as our answer as our frequency of 0 itself. देखो, हाँ, for that case, see, like जैसे ये 4 है, like for example you have something called 8 as well, ठीक है? Okay. So you have something called 12 as well. What do you think the remainder of 0 का frequency है? 3, right? 1, 2, 3, right? 3. है ना? So can you say you have 3 into 3 combinations? K minus 0 is 3, right? 3 into 3 combinations है क्या हमारे पास? 3, no. Like this will be one combination, this will be the other Yeah. combination, and this will be another combination, right? Right, yeah. So it is nothing but 3 into 2 by 2. So this is nothing but n into n minus 1 by 2. This is combinatorics, right? Okay. Sum of n minus natural numbers, right? So Yeah. this will, like, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि like okay, for I found 0, तो यहाँ पे k minus 0 के लिए find करो. K minus 0 कुछ होता ही नहीं है. It is nothing but 0, right? So 0 into 0 you can't do. For that case you need to do this, and for this case, if at all, if k is even, for that case you'll do it in this way again. n into n नहीं करोगे, क्योंकि same value को you can't multiply with the same value. It will generate lot of other combinations, right? Right. थोड़ा सोचो इसके बारे में. Okay. ठीक है? हाँ, tell me. Hello. Yeah. In that previous problem, we have parameters like the difference between the characters.
हाँ difference between the characters हाँ and the length of the string okay and that list, and how we store all these three, how we will store all these three. not three no, only two parameters. One is the length of the string and the difference between the characters as a string. Okay, and where we will store that list of strings? So list of strings तुम direct like list of list बना लो ना. That's what I'm saying. Similar to group anagrams. Have you done the group anagram question? Yeah, I means I have not implemented it. I understood. Means we will Okay. in a hash, So hash map create करो. See, create a hash map that is okay, mapping a string to list of strings. list of strings. Yeah. ठीक है? So what will happen is that कि the moment you find the same string, ठीक है? एक नया string आया, ठीक है? You calculate its key कैसे calculate करोगे? The difference between the characters and the length को बना के कुछ key बनाया, and you will just check if it is present in the hash map or not. If it is present, ठीक है? So you'll do mp.get key, and then this is the list, right? So you'll add the new string to it. Like you found this, and then you'll add this string into the same category. If it is not present, okay, you'll create a list with only one string and then add it and then put it against this. Okay. Correct. In this in this keys, that string, no. Okay, means the difference of characters. Means we should check the difference of characters also, no. That's what I'm saying, na. So that's how you generate this key. So from the string, you will be generating a key. The key is nothing but difference of characters. Okay. Like Okay. if you want me to say, like just iterate through the string group this way, right? And just take a dummy like key, like some key, like string key. It is initially null. मतलब null in the sense कि it is initially empty, right? Empty, right? So right. try to do it in this way. ठीक है? मतलब यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है? And try to do it in this way. S dot caret I minus S dot caret I minus 1. Don't you think this will do the work? I'm more confused now. Okay. See, bro, like this is the like for example, if you're talking about ACD string, okay? So you're iterating from here, like from this you're taking this string. So this is S dot caret at I, okay? Yeah, And this is yeah. S dot caret at I minus 1. That is this one. Yeah, right? yeah. Okay. What is the difference between them? It will be 2, right? This 2. guy will be giving the 2 value. So you're adding Yes. it like in the key, you'll be adding 2 here. Okay, okay. Space दे दो उसके बाद, ठीक है? Like you just add space as well, ठीक है? In the next time, like I का value 2 हो गया. Now I is here. So D minus C. I minus 1 is C. D minus C is? Even 1. 1, right? So you'll append Yeah. 1 here. So this will be the key. 2 space 1 is the key for you to identify if it belongs to the same group or not. Okay, okay, okay. Yeah, means where will that length of string comes? Length of the string को तुम okay, that's a good question. ठीक है? तो मेरे हिसाब से like if you're giving spaces, ठीक है? So the number of characters these are, ठीक है? They will like you know that like the number of spaces will justify what is the length of the string actually to me. Okay, okay. That length of string also will compare with this key itself, and it will okay. Correct. So if at all you have a 4 string, if you have a string of size 4, ठीक है? ABCD की तरह, this guy will give a 1 1 1 1, ठीक है? So this will have a space in between. So don't you think this will uniquely identify a 4 string integer only, right? Yeah, yeah. Length of string plus. You might think कि ये 11 हो सकता है. You can understand 11 and 11, but it can't because of the spaces. Yeah, just try to use something of your brain, ठीक है? And try to put the key, nothing but like just put the first character as the length of the string. How cool is that? इसका लेंथ 3 है ना, ठीक है? तो मैं 3 को फर्स्ट में रखूंगा और उसके बाद मैं एक्चुअल की बनाऊंगा विदाउट एनी स्पेसेस. Even this will work. Yeah, okay, right. Various ways, right? So are you guys understanding this particular concept?
how we have generated the key, right? So I'll just put this thing in the chat today, not in the chat, I mean. Okay, let me save it. Okay. Bro, I think that the tricky questions like this, if we code tricky questions like this, we will get more clear. If we I are know, practicing it's not more like, I confusing. know, I can clear it right away for you. Okay, so I can code it. So I have 20 minutes, I can code it. But what I'm believing is, okay, I want you guys to try it on your own, man. Like then only you'll be learning. Try ठीक है? ourselves. हाँ, Yeah, तो एक बार करो यार. yeah. अगर नहीं कर रहे हो तो like I can do it. अभी करना है तो अभी कर लूंगा. Like not a big deal for me. ठीक है, एक बार सोचो लेकिन कि कैसे करोगे. And like you will be facing various challenges while doing this thing. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होने वाला, कभी नेगेटिव भी होने वाला है. तो उसके लिए तुम सर्कुलरली कैसे घुमाओगे? यू दैट इज द चैलेंज वन. Yeah, okay. है ना? मतलब दिस थिंग कुड बी ए एंड दिस थिंग कुड बी वाई. ठीक है, सो इसको कैसे टैकल करोगे? Percentile 26, I think use percentile. हाँ, 26. अगर नेगेटिव है तो +26 कर दो. Yeah, okay, yeah. करेक्ट. तो लाइक द होल गेम हियर इज अबाउट ग्रुप anagrams का. Like there you're just sorting the character string, here you're generating the key. Generate the key. That is the only difference, guys. That is the only difference you're having. Generating of the key थोड़ा मुश्किल है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन like इसमें तुम लोग काफी challenges face करने वाला है. And you when you implement that thing ना, you'll actually learn like how to like create a solution. ठीक है, so क्योंकि like not necessarily कि मैं जो भी solution पढ़ाने वाला हूँ that will be coming in your interview, right? तुम्हें खुद से कोड करना पड़ेगा, तो वो skill सीखने के लिए तुमको खुद से करना है अभी, क्योंकि टाइम है हमारे पास. समझ रहे हो गाइस? गाइस, हेलो, Yeah. I hope it is clear. ठीक है, so this is one of the challenges कि negative value आएगा तो कैसे करोगे, right? That is one of the challenge. ठीक है, you guys need to understand how you are building the function, how you are building the flow of the function, right? And at the end how you are printing it as well, that is another challenge, right? So these are the things that you guys will be learning, right, from this. It's a good question actually. तो इसलिए मेरे को लगा कि this was given in this like in the test, so I wanted to teach this. But cool, if it is not given, still we are doing it, right? Correct. But if I code it, ठीक है, you guys are not going to learn anything. ठीक है, I can just code it right away. ठीक है, अभी कर सकता हूँ, 2 मिनट नहीं लगता मुझे कोड करने में इसको. ठीक है, लेकिन यार सोचो ना, like you guys know the logic, लेकिन तुम कोड नहीं कर पा रहे हो, तो like that is like मतलब इंटरव्यूअर तो वो नहीं चाहेगा ना कि you are good at logic but not good at coding, right? So you guys should be capable enough of converting the code into the converting your thoughts into the code, because that is what they are expecting. ठीक है, just look at the group anagrams code. ठीक है, उससे कॉपी करना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कॉपी करना, बस तुम्हें जनरेट करना है, बस इतना ही, बस तुम्हें जनरेट करना है. ठीक है, I can just generate करने के लिए I already wrote the code. This is the code. Generate the key. This is the code. Except if key is less than n, मतलब नहीं, if this difference is less than n, उस टाइम पे +26 करना. That is the only step I left. बाकी सब same to same. ठीक है guys? Hello. Why is everyone silent today? Right? ठीक है, तो कोई नहीं. ठीक है, like I'll be happy if you guys try. ठीक है, ठीक है. So this is the code, man. Like generate the key. This is the code. You'll return the key at the end. ठीक है, and you will just check if that key is present. If it is present, ठीक है, add it to that list. Add the string to the list. If it is not present, create a new list with that string and add it to the list. Hash map. बस simple. ठीक है. Cool, guys. Is this fine? ठीक है, so shall we end the class?
like I wanted to discuss this thing as well. Number of subarrays with at most k different values. Okay, number of subarrays with k different values. So I've left this thing for you guys, right? So is there any progress in this? I was talking about linked list questions, but like I'll just put that. Like I can just put that, but like that will be of higher side. Okay. So copy linked list. So this is the question, man. So this is a very good question. ठीक है, मतलब hard level में आता है, hard level में नहीं आता, medium level में आता है, but try this. ठीक है, you guys can do. ठीक है, I'm just giving it. ठीक है, I'll put it in the chat. ठीक है, so even if you're not able to do it, like it's fine. ठीक है, because hashing का अभी you guys are like the basics को fundamentals को strong करना है. ठीक है, so this question, guys, number of subarrays with at most k different values. This is really important. ठीक है, इसमें how you're sliding the window, right, and trying to find the number of subarrays with at most k different values, you'll find it. ठीक है, so this key, मतलब if at all you wrote a function which will take a input k and return number of subarrays that return a number of subarrays that return the that have k distinct elements, at most k distinct elements. Okay, so for example, if I created a function which is taking an input k and it is submitting the number of subarrays that are at most k that have at most k distinct elements. So जो ऐसा है, if I made something like that, the same function, if I call it with k minus 1, what will it return? Number of subarrays that have k minus 1, at most k minus 1 distinct elements. है कि नहीं guys? Guys, ये चीज से agree करते हो कि नहीं? Hello? Why there is no response? Hello? So this function, like I've created a function that is taking k and it is giving me the number of subarrays that are at most k distinct elements. I have another number of I have called the same function with the k minus 1 value and number of subarrays that have at most k minus 1 distinct elements, right? So if I subtract both of them, if I do something like function of k minus function of k minus 1, can you guys tell me what it will return? It will return nothing but number of subarrays with exactly k distinct elements. Don't you think? एक बार सोचो इसके बारे में. This guy is giving number of subarrays with at most k distinct elements. This guy is giving me number of subarrays that have at most k minus 1 distinct elements. ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो I'll be getting number of subarrays with exactly k distinct elements? So that is exactly the question that is given in the portal. ठीक है, so if you are able to solve this question, ठीक है, which I'll give you like I can teach you the code as well. ठीक है, we'll code it tomorrow. ठीक है, then in that case, like fun k minus 1 is the answer that you are getting. Agreed, guys? एक बार सोचना इसके बारे में. Like I know that काफी information आज bear on, like I'm giving a lot of information, but it's necessary. Like try to think these things. अगर अगले दिन भी समझ नहीं आया, you can ask me. मैं properly code करके दिखा दूंगा, right?
So don't worry about that, but just put your mind on the work. Okay, just brainstorm this thing. Implementation of hash maps means creating your own class, also necessary to learn. Like kind of like for the simple, like simple hash maps, you can easily create. Like the frequency character is a kind of hash map, correct, Mohit? Right? But like it will be difficult when you're talking about hash maps that are like, you know, whose hash value, like calculating the hash function becomes really difficult. मतलब जैसे कि string को key की तरह use करना है, so string को you need to compress it into a index, right? Yeah, right. So like that thing is not that important. You can directly use the STL thing. Okay. But again, like to identify that thing, okay, that like I never personally learned it to a great extent. Okay, because that is not that necessary, because you have hash map which is doing it in a big of one time, right? So that is mostly needed. Okay. So if you are able to write it for simple functions जैसे कि character हो गया, जैसे कि numbers भी हो गया, ठीक है? अगर if you are trying to find a frequency of a value, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसे दिया, if at all it is given something like कि you are given an array, ठीक है? If you are given an array, ठीक है? And if at all you are kind of asked to create a hash map which is taking a key value pair and with the value against its frequency, जैसे कि 1 का 3 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 2 होगा and 2 का 1 होगा, right? So if at all you're supposed to create something like this, ठीक है? And you know that values का value कुछ 1000 ही जा सकता है maximum. So why don't you create an array of size 1000? थाउजेंड का size बना के, why did you do this thing, bro? How many of you feel that this is correct? I'll just run a loop. Whatever value comes, I'll just put it here. So can I do this thing, guys? Correct. So अगर 1000 है या 10,000 है, like I can create an array of this thing, right? Because it is similar to what we were doing with the character, right? So this thing can be like, this can be used as a direct hash value, है ना? So it's like index value की तरह directly use कर पा रहा हूँ, correct? That is the benefit, है ना? So वहाँ पे like while you're doing the strings, वहाँ पे 26 strings ही होते हैं, 26 characters ही होते हैं. So you just take that character, subtract a from it, ठीक है? But now you can directly use this. अगर समझ लो कोई बोला कि 1000 से 1100 elements, like this is the range of the elements. What will you do, guys? Can you tell me? This is the range of the elements. Mohit, you're correct. ठीक है? Mohit says that I'll take a array of size 1101. ठीक है? That is correct. But can you see that there are only 100 elements that are needed, but you're taking a 1100 size array? Mohit, correct. Minus 100 करो ना, 100 का element, like just take a 100 array, similar to what we were doing with the frequency. ठीक है? Just take a 100 का array, 100 size का array, whatever the value is, x minus 1000 करके just calculate the frequency. You're just bringing that whole range from there till to this particular thing, 0 to 100. Correct? तो जैसे मैं वो कर रहा था, like 97 को I'm making it 0, right? So this is the kind of hash function. ठीक है? Yeah, Mohit, you're correct. You will work, ठीक है? But what if ये number बहुत बड़ा है, मतलब 11,000 नहीं, ये समझ लो 10,000 है. तो लेकिन देखो, like for 100 elements you have to create an array of 10,000 elements. That is not making any sense, right, Mohit? So इसीलिए this particular technique will work.
ठीक है, तो चलो गाइस, लाइक काफी सारी चीजें सीखे हमने, लाइक ऑल द 3 क्वेश्चन फ्रॉम द like the techniques that are revised, actually that is really important, and the great question of similar to group anagrams where you're creating the key based on its differences, that is a great question. ठीक है, sum pairwise sum subtraction, I mean divisible by k, great question. The divisible, like the k wala है ना, I mean number of distinct element as k, that is a great question. ठीक है, so such questions you guys have learned. ठीक है, I'll put the code if possible. ठीक है, and for the remaining we can just discuss the code, or I'll just code it for you guys, don't worry. ठीक है, so let's take off for now. ठीक है, I hope you guys found it nice and you learned something from today's class, right? So yeah, good night. So I hope I didn't confuse you guys much, but this is needed actually. Like the way you guys are supposed to think, that is necessary actually. ठीक है, then good night. I'm closing the class. ठीक है, I'll send all the links in the Discord. I mean that particular doc. ठीक है, I'll update everything. ठीक है, चलो man, good night. For your dedication for the past